are the most beautiful creation of God. Dear children, you are God's wonderful gift to human society. It is you who make everyone happy. This day being dedicated to you to make you feel you are loved, you are cared, and you are wanted. We teachers feel immense pleasure in presenting you a wonderful program to make your day colorful. The heart and the mind of a child is pure as the sky that keeps nothing within and makes its environment cherished and cheerful. Lord, we believe that you love all the people in the world, especially all the children. So, let us thank God by offering a small prayer. Now I request a prayer group to lead us in prayer. बाइबल पठन संत मार्कुस अध्याय 10 वाक्य 13 से 18 तक। बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पापसकरं कुशलसुपसम्पदा सचितपर्योदपनम् एतबुद्धास शासना. Buddha says that don't commit any unwholesome action. To perform any action, one has to keep the mind concentrated. The mind has to be purified in its totality, and that is possible only if you work with Vedana and purified at that level. Then the whole mind gets purified. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्मोह निर्भय अकाल मूरत अजूनी सबम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न होइए जे सोचे लखवार चुप्पे चुप न होइए जे लाई हर लखवार भुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया पार सहन स्यान पार लखवे तो एक न चले नाल किवी सचियारा होइए किवी कुड़ी टुट दे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिए नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय से लिया है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी भी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Prayer for children. Heavenly Father, today we pray for all the children in the world. Bless them and keep them in your holy care. Nurture them, Lord, by your grace and mercy. Guide them in their studies and fill them with your love and wisdom. For this we pray to the Lord. Amen. Almighty Father, we bring all the destitute children, Lord, especially the newborns. Lord, send your angels for their refuge. Grant them enough meal. Bless them with good health and keep them away from all diseases. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us bow our heads in reverence to our Almighty. Prayer for the children. As you have said, Lord, ask and you will be granted. Today, Abba Father, we ask you to touch and heal all the children around the world during this hard time of Corona. Bless them and keep them in your heavenly care. Also, we pray for all the family members. May they experience your mercy and love during this time. For this we pray. Amen. Puppet is one of the most powerful means to convey the message. It develops curiosity in the hearts and mind of the people. We have our teachers to take you to a mobile puppet show with a wonderful theme, a gift to you. Life is a precious gift and childhood is the special one. Even the adults love to be in this stage. So keep the curious child growing within you. Tired now by working hard in this farm. I'm feeling so sleepy. Oof. Wow, what a beautiful
these farms are, and look at the river beside it. Wow! What a wonderful farm it is. One day, I want to go there. I want to see the nature's beauty. Surely, I'm going to purchase that farm. No matter how much the world tries to hold you back, always continue with your dream you want to achieve. It is possible. Believe in yourself to make wonders. Find and do what you love to do. We have double tree, Diwali as well as Children's Day. I'm going to wear my birthday dress only because I did not purchase any new dress. Yes, I will wear my birthday dress only. I have so many dresses to wear. Which should I wear for today's function? I don't like this one. This one is good. Or this one is good. I'm totally confused. What should I do? I will do one thing. I will buy a new dress. Yes, I will buy a new dress. शिकवे तो सभी को है जिंदगी से, शिकवे तो सभी को है जिंदगी से, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास जो है आप उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उसकी शिकायत ना कीजिए। Today I have done a lot of work and learned so many new things. Now I will sleep peacefully. Wealth, power and money and so many guards to protect me. But I cannot sleep well. What is disturbing me? See this lady, how she is sleeping peacefully. Why I cannot? One day you will be grown up, but remember, money can give you everything, but cannot give you peace. Learn to be satisfied with whatever you have. You will be always happy. न फिक्र थी न चिंता थी, न फिक्र थी न चिंता थी, खेलने कूदने की अटूट क्षमता थी। करते रहते कोई न कोई कारनामा, जीवन को बनाकर रख देते एक हंगामा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बचपन हमें ईश्वर की दी हुई एक अमूल्य सौगात है और इसे आप भरपूर आनंद लेकर जिए। ये हमारे जीवन का वो लम्हा होता है जो हमारे जीवन में फिर से वापस नहीं आता है। याद आते हैं बचपन के वो पल, याद आते हैं बचपन के वो पल, क्योंकि सभी को भाते हैं ये पल, जिस समय बैठे हर काम किया करते थे हम अलछल। तो सचमुच अ गिफ्ट टू यू, इसका क्या अर्थ है? आइए देखते हैं इसके पीछे छिपा हुआ एक अर्थ। Whatever activities you do them with love and honestly. Each and every activity teaches something. So give your 100% and do the best. The good things you have, share with others. Motivate yourself to follow your interest. We learn the values from our family and friends. They are the rich source of values. Give respect to your relationship. We learn from our elders, teachers, even from our small brothers and sisters. They are rich sources of our life. Today, most of us are the followers of copy-paste ideas. Flourish your own thought, ignite your ideas and spread it.
like sunbeams, and you will become a lovely person in this world. You walk in the footprints of others, you won't make any of your own. So, keep your originality. To achieve all this, you have to follow a disciplined life. You must do yoga and exercise. You should love whatever you do. You have the source of energy within. Spread it to others. Spend your energy to keep yourself happy. Find your own in you. खुद को पहचानो. Then you will be the unique person in the world. All these stories have given us the values which showed us the path that we should live our life simply, should walk humbly, and should love genuinely. All good will come back to you. Children are the best creation of God. They spread joy in every season. Every child is a different kind of flower that all together make this world a beautiful garden. Let's give them love, attention, affection, and nurture them with utmost care. Here is Miss Megha to give a message on this auspicious occasion of Children's Day. Principal, respected teachers, and my loving students. As we all know that we are celebrating Children's Day, and children, you are the future of our country. A very famous quote of Chacha Nehru states that the children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of our country. We celebrate Children's Day on 14th November as a tribute to Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of our country, born on 14th November 1889. Let me tell you one incident of his life today. Nehruji, as a child, needed a pen. Out of the 2 pens, he took 1 pen of his father from the table. He said that father would never use both the pens at the same time. When father returned from court, he found that one of the pen was missing. He was very angry and the whole house was very scared. Father said that someone had stolen an expensive pen. Finally, the pen was found in Nehruji's room. Father got very angry that his son had taken the pen without his permission. He beat him severely. From this incident, Nehruji learned a lesson: never to do things in a dishonest way and never to disobey his father. So, children, we also learn from this incident that when our elders treat us unfairly or are harsh towards us, do not despair. Focus on the good points. So, children, always be obedient to your elders and always respect and obey your elders. So, a very happy Children's Day to all. Can you tell me why we take pictures and videos in all the function? Though they are non-living, still and clipping, they keep our memories everlasting. So here is a small video presentation which reminds us of our beautiful memories. मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नु मौज में रहने देना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इससे झूमने दे अपनी बीत ते कुड़ी नु नचने दे, हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ झुमके कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे तू सारे या फिक्रां नू छड्ड के बन ठन के कुड़ी ला ला
की शहनाई बीते दिलों को पुकारे दिल के द्वारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले पापा नहीं है दादी सी दीदी दीदी के साथ है सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले साथ निकले रोज सवेरा दूर करे अंधियारा रेस रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा ला 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 सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले पापा नहीं है दादी सी दीदी दीदी के साथ है सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले खोई खोई आंखों में जो मीठे मीठे सपने क्या ये दिल करे पहले पहले दिन की ये नई नई सुबह आओ चल करे हमको चबाते जाए सबको बताते जाए अपनी हसरतें यार मत भूले जगह है ये बड़ी कुल सुनो सुनो जरा लेट मी से भूलेंगे हम तो नहीं सोचेंगे हम भी कभी स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 सीखेंगे हम ये नहीं है क्या गलत क्या सही स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 आएंगे ना It gave me a nostalgic vibe. Do you? How can I forget that you kids are missing your school? Badly. Same as your teachers. And especially the famous dialogues of your teachers in the classroom. So, here are some flashback scenes to refresh your memories. Tell me, what were you telling? Let the whole class know your joke. Children, am I creating a joke? My goodness. Children, finish your work. Shh, brother is not around. Have you forgot to eat? Have you forgot to take a bath? Then how you forget to do the homework? Who's talking there? How many times I told you, children, pay attention into my class. If you behave nicely in this period, I will take you out for games in the next period. खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझ ही से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसी प्रकार अपने बुलंद इरादों के साथ अपने थिरकते कदमों से चिल्ड्रंस डे के अवसर पर अपना डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे। रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। लक्ष्मी जी की आरती उतारे, माथे पे
अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा, तेजे अली घरे घरे मन खुशी दे माते जे, चतुर्दिके आलो घरे दे अली आशे। ए दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी ते रंग लगे दिवाली आई वे। अच्छाई को अब रोशन करे हम, आग में बुराई को जलाए। सबको यही देती संदेशा, दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा ने चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे। दीपावली अनेक रूप संतोष दे तंद दे, होली सुनाई निरति रिकम दीपावली वंद दे। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा, दीपावली fills the streets with happiness and everything. A crowd of light ignites the night. दीपावली is here today. दीपावली गली गली बन के खुशी छाए। This Diwali, let's give thanks to the grace of God for holding our dear ones, our health, our family, our friends, which never ends. On behalf of our Montfort family, here is Miss Isha to convey a message on festive season of Diwali. विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्योहार खुशियों की सौगात ले आए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षक वर्ग, पालकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को दीपावली की हमारे मॉन्टफोर्ट परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी को दीपावली का धार्मिक महत्व पता ही है। दीपावली हम भगवान श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति और उनके अयोध्या वापसी की खुशी में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार हमारी जिंदगी में खुशियाँ और उमंग ले आता है, परंतु इतनी खुशियों और पटाखों के शोर में हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को भूल जाते हैं और अपने पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं। हमें यदि सुरक्षित रहना है तो हमें हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं तो हम भी सुरक्षित नहीं। परंतु यदि हम आज के वर्तमान समय में देखें तो दीपावली का अर्थ केवल रोशनी, मिठाइयाँ और पटाखों के शोर तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि दीपावली यह खुशियों का त्योहार है और यह खुशियाँ बांटने से और अधिक बढ़ती है। इसलिए यदि संभव हो सके तो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके हम उसके जीवन में खुशी के 2 पल इस दीपावली के सुनहरे अवसर पर उसकी सहायता करके उसे दे सकते हैं, क्योंकि दीपावली यह खुशियों का त्योहार है और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। दीपावली यह अंधेरे का नहीं बल्कि रोशनी का त्योहार है, जिसे हम आपसी प्रेम, भाईचारे के साथ खुशी खुशी मनाकर दीपावली के अर्थ को सार्थक कर सकते हैं। अंत में मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगी, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे। इतना उजाला हो आपके जीवन में कि दिए भी रोशनी मांगे आपसे। धन्यवाद। The role of a teacher and student is similar to that of a grain and rain. From the clouds all the time, the rain may not be gentle, sometimes harsh too. It is up to the grain to take things for good, to nurture as a fertile plant.
Dear cute kids, we always seek various creative ways to teach you something from anything. Today, being your day, we are passing the hope of light to illuminate your life. I wish you a very happy Children's Day and prosperous happy Diwali to all my loving children and dear parents. This hope of light may bring joy, happiness and good health in your life. So I am passing this hope of light to you. Let us illuminate the light of knowledge. Let us illuminate the light of trust. Let's illuminate the light of happiness. Let's illuminate the light of energy and strength. Let us illuminate the light of wisdom. Let us illuminate the light of intelligence. Let us illuminate the light of good luck and love. Let us illuminate the light of active life. Let us illuminate the light of togetherness. Let us illuminate the light of creative life. Let us illuminate the light of practical life. Let us illuminate the light of self-control. Let us illuminate the light of honesty. Let us illuminate the light of care. Let us illuminate the light of peace. Let us illuminate the light of holiness. Let us illuminate the light of goodness. Let us illuminate the light of grace. Let's illuminate the light of hope. Let us illuminate the light of satisfaction. Let us illuminate the light of divine power. Let us illuminate the light of passion. Let us illuminate the light of supreme bliss. Let us illuminate the light of truthfulness. Let us illuminate the light of kindness. Let us illuminate the light of purpose. Let us illuminate the light of compassion. Let us illuminate the light of motivation. Let us illuminate the light of strength. Let us illuminate the light of creativity.
Let us illuminate the light of gratitude. Let us illuminate the light of prosperity. Thank you, teachers. We will always keep this hope of light illuminated and shining within us so that others can see their way out of darkness. Thank you, teachers. We will always keep this hope of light illuminated and shining within us so that others can see their way out of the darkness. Without a dance, celebration is incomplete. Now get ready to experience an unimaginable dance performance by your teachers. Dear children, every year you're eagerly waiting for the teacher's dance. So here we present a dance performance for you all. रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाते मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई सज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी
झुकमा जगमग थाय रे आव्या तेरा मोती बेराना चौकमा आव्या तेरा झुकमा जगमग थाय रे आव्या तेरा नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे Hope you all enjoyed our dance performance. Wish you a very happy Children's Day and prosperous Diwali. Be safe and enjoy. No doubt, you kids are more creative and talented than us. Still, hope you all enjoyed it. Thanking is the last part of any function, and that is the essence that makes the celebration meaningful. A grateful heart is always a thankful heart. May I now invite Miss Adya of class 5th C to propose a vote of thanks. Joy is the simplest form of gratitude. First of all, I want to extend my most sincere thanks to the Almighty God. With His blessings and grace, we are able to make this moment an unforgettable one. On behalf of students community, I, Adya Bansud, want to thank Principal Reverend Brother Shine Alex, Vice Principal Reverend Brother Joe Manjoy, and Middle School in charge Reverend Brother David for their continuous support, guidance, and standing as a pillar for strength to stimulate us to do our best. An event like this cannot be happened overnight. We have been fortunate enough to be backed by a team of teachers for their untiring work who put all their efforts to make our day a memorable one by their wonderful performance. Last but not the least, I need to mention my deepest sense of appreciation to all my friends who participated in this event for gracing the occasion by their gala event. Once again, wish you Happy Children's Day and Shubh Deepavali. Thank you.